The question is, consider the following statement. पहला statement, neural system is better organized in insects. Better organized होता है insects में neural system, जहाँ पे एक brain present होता है along with number of ganglia and neural tissues. तो ये जो statement है ये बिल्कुल correct है. दूसरा statement हम देखते हैं, neural organization is very simple in lower invertebrates. This is also correct. So the correct option for this question will be option number B. Both 1 and 2 are true. The question is, which of the following statements are correct regarding electrical synapses? Pehla, pre and postsynaptic membrane neurons are in very close proximity to electrical synapse. Correct. Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the synapses. Correct. ट्रांसमिशन एक इम्पल्स का जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अक्रॉस होता है वो बहुत सिमिलर होता है जैसे कि इम्पल्स कंडक्शन सिंगल एक्सॉन के अक्रॉस. करेक्ट. इम्पल्स ट्रांसमिशन जो होता है वो फास्टर होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में देन अक्रॉस द केमिकल सिनेप्स. करेक्ट. इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर रेयर इन अ सिस्टम. सो जितने भी सारे स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के रिगार्डिंग वो करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. The question is, consider the statement as true or false regarding when a neuron is at rest and no impulse is conducting. हमें statement true or false बताना है जब न्यूरॉन रेस्ट पे है और कोई impulse का कंडक्शन नहीं हो रहा है. सबसे पहला, exoplasm inside the axon contains high concentration of K plus and negatively charged proteins. This is true. The exoplasm inside the axon contains low concentration of sodium plus. Sodium, true. Fluid जो axon के बाहर होता है उसमें low concentration पोटेशियम का होता है. True. लास्ट स्टेटमेंट, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम. रॉन्ग. यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का होता है ना कि सोडियम का. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी. पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, पर चौथा फॉल्स है. The question is, gray matter of the brain is first present outside the white matter, right? Contains aggregation of axons, wrong. Gray in color, yes. Contains cell bodies of nerve fibers, right. इसमें so the correct option for this question will be option number C. The question is, which of the following statements are correct about the midbrain? सबसे पहला, located between the thalamus or hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. Thalamus, hypothalamus forebrain के में और pons hindbrain के बीच में present होता है ये. तो ये जो statement है वो correct है. दूसरा, possesses a canal named cerebral aqueduct which passes through it, right. Third, dorsal pod consists of 4 lobes, right. So the correct option for this question will be option number D, all of the above. The question is, match the following columns. Column 1 को column 2 के साथ match करना है. पहला column क्या कह रहा है? पहला column है multipolar neuron. तो मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं उसमें मतलब क्या हुआ, एक एक्सॉन मल्टीपल डेंड्राइट्स, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन. दूसरा बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें कि एक एक्सॉन होगा एक डेंड्राइट होगा. थर्ड यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें कि एक एक्सॉन होगा और एक हमारा सेल बॉडी होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी. The question is, the medulla contains center which controls respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion. So the correct option for this question is option number D, all of the above. The question is, the given diagram below is the functional organization of the human nervous system. Identify A, B, C, D and E. तो पहला हमारा human neural system जो होता है, it is organized into A and B, which is A is हमारा CNS, which is central nervous system, और B जो हमारा होगा वो होगा peripheral nervous system. Peripheral nervous system. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू, दिस इज ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. ऑटोनॉमिक के अंदर दो आते हैं, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक और दूसरा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी. The question is, a diagram showing axon terminal and synapse is given. Identify correctly at least 2 of A to D. ये हमें correctly identify करना है. तो A हमारा क्या है? A हमारा है receptor. B क्या है? तो B जो हमारा है that is neurotransmitter. C क्या है हमारा? तो C जो हमारा है that is synaptic vesicles. D क्या है? तो जो D है हमारा दैट इज एक्सॉन का टर्मिनल.
तो हमें दो जो है ऑप्शंस उसको कहते हैं आइडेंटिफाई करना है ए टू डी के बीच में. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए रिसेप्टर होगा, सी हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स होगा. The question is, brain controls the brain क्या क्या control करता है? Voluntary movements, yes. Balance body का, yes. Functioning of vital and voluntary organs, right. So the correct option for this question is option number D, all of the above. The question is, respiratory or exchange part of the respiratory system comprises of alveoli and their ducts. So the correct option for this question is option number B. The question is, inspiration is initiated by, inspiration मतलब कि when we take in air, तो inspiration initiate कैसे होता है? It is initiated by contraction of the diaphragm. So the correct option for this question is option number B, contraction of the diaphragm, जिसकी वजह से inspiration जो है वो initiate होता है. The question is, additional muscles which impact the ability of humans to increase the strength of inspiration and expiration are found in. It is found in the abdomen. So the correct option for this question is option number C, abdomen. The question is, additional volume of air a person can inspire and expire by forcible inspiration and expiration respectively is called. वो additional volume of air जो person inspire कर सकता है, expire कर सकता है forceful inspiration से expiration को, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं IRV, which is inspiratory reserve volume, and ERV, that is expiratory reserve volume. So the correct option for this question is option number B. The question is, name the artery which carries deoxygenated blood. So that is pulmonary artery. So the correct option for this question is option number A, pulmonary artery. The question is, the solubility of CO2 in the blood is, it is around 20 to 25 times higher than oxygen. So the correct option for this question is option number B. The question is, which of the following statement is correct about respiratory organs of different animals? इनमें से कौन सा statement correct है regarding respiratory organ of respiratory different animals में? सबसे पहला, the exchange of O2 and CO2 via simple diffusion across body surface occurs in aquatic arthropods. ये जो statement है ये correct है. दूसरा, ये जो statement है ये हमारा simple diffusion के थ्रू होता है aquatic arthropods में, तो this statement is incorrect. दूसरा, complex system of air tubes called trachea is present in earthworms for respiration, wrong. Fishes have lungs for respiration, नहीं, fishes में gills होता है. Cutaneous respiration occurs in amphibians, ये जो statement है ये हमारा है सही, क्योंकि cutaneous respiration amphibians में होता है, frog में होता है cutaneous respiration, that is respiration through skin. The question is, volume of air that will remain in the lungs after normal expiration is called. It is called FRC, which is functional residual capacity. So the correct option for this question is option number D. The question is, emphysema develops mainly because of cigarette smoking. So the correct option for this question is option number C. The question is, which of the following groups are supported by incomplete cartilaginous rings? Incomplete cartilaginous rings से कौन सा supported होता है? So it is trachea, the primary, secondary, tertiary bronchi and the initial bronchioles. They are supported by the incomplete cartilaginous ring. So the correct option for this question is option number D. The question is, which of the following is or are controlled by the human brain? सबसे पहले बैलेंस बॉडी का राइट, सर्केडियन रिदम बॉडी का राइट, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन राइट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड किडनीज राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी एंड डी. The question is, axon endings release from its synaptic vesicles a neurotransmitter substance known as acetylcholine. So the correct option for this question is option number A. The question is, the cerebral cortex is, तो cerebral cortex जो होता है वो outer layer होता है cerebrum का, जिसको grey matter भी कहते हैं. So the correct option for this question is option number C. The question is, the structure which does not contribute to the breathing movements in mammals is larynx. Yes, larynx sound box में कोई contribution नहीं होता breathing movement में. Ribs did participate, diaphragm they participate, intercostal muscles they participate. So the correct option for this question is option number A. The question is, which of the following is correct? इनमें से कौन सा correct है? सबसे पहला, efferent fibers that transmit regulatory impulses from peripheral tissues to CNS.
So this statement is wrong. दूसरा, somatic neural system transmit impulses from CNS to skeletal muscles. This is correct. तो यहाँ पे correct statement पूछा है, तो correct statement for this question will be option number B. The question is, the structure which prevents the entry of food into the windpipe is, it is epiglottis. So the correct option for this question will be option number D. The question is, सबसे पहला statement, multipolar neurons are found in the cerebral cortex. This statement जो है ये बिल्कुल correct है. दूसरा statement, unipolar neurons are found in the retina of eye. Unipolar neurons तो होते हैं वो retina of eye में नहीं बल्कि पाए जाते हैं olfactory epithelium के अंदर. Olfactory epithelium के अंदर. तो statement 1 correct है, statement 2 जो हमारा है वो incorrect है. So the correct option for this question is option number B. The question is, assertion. Ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by the sodium-potassium pump. This is correct. दूसरा, reason, sodium-potassium pump transport 3 sodium ions outwards from 2 K plus ions into the cell. This is also correct. तो यहाँ पे assertion, reason दोनों correct है और reason जो है वो correct explanation assertion का. So the correct option is option number A. The question is, during the transmission of nerve impulse to a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electrical charge? तो पहला negative होता है, फिर positive होता है, फिर again negative हो जाता है. So the correct option for this question is option number B. The question is, which of the following is the primary cause of wheezing and asthma? So it is bronchial inflammation. So the correct option for this question is bronchial inflammation. The question is, given below are 4 respiratory capacities in column 1 and 4 jumbled respiratory volume of a normal human adult in column 2. इसको मैच करना है. तो सबसे पहला रेसिडुअल वॉल्यूम तो वो हमारा 1200 ml हो गया. वाइटल कैपेसिटी that is 4500 ml. Inspiratory reserve volume that is 2500 ml. Inspiratory capacity 3500 ml. So the correct option for this question is option number D. The question is, in the given figure, label A represents अपना trachea और जो label B है, it represents the bronchioles. So the correct option for this question will be option number D. The question is, about 70% of CO2 is transported as carbon and hemoglobin. Is transported as bicarbonates. So the correct option for this question will be option number C. It is carried in the form of bicarbonate. The question is, vital capacity of a lungs is, it is total lung capacity minus residual volume. So the correct option for this question will be option number A. The question is, the cerebrum is made up of how many cerebral hemispheres? So it is made up of 2 cerebral hemispheres, left and right. So the correct option is option number B. The question is, unidirectional transmission of the nerve impulse is maintained by? It is maintained by the synapse. So the correct option is option number C. The question is, which of the following statement is incorrect? सबसे पहला, mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitats and level of organization. Correct. Lower invertebrates जैसे कि sponges, coelentrates, flatworms, ये exchange करते हैं oxygen CO2 से by simple diffusion. Correct. अर्थवर्म जो होते हैं वो यूज करते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल और इंसेक्ट्स के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक है. करेक्ट. तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव. The question is, thoracic chamber is formed A, that is dorsally by the vertebral column, right, and ventrally by the sternum, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. So the correct option for this question is option number A. The question is, which one of the following 4 organs of respiratory system is correctly matched with its characteristics? सबसे पहला, larynx को sound box बोलते हैं, right. B, trachea is a small flap that prevents food from entering, wrong. It is epiglottis. Third, pharynx, common passage for food and air, right. Alveoli, irregular walled vascularized bag-like structure, right. तो यहाँ पे तीनों statement जो हैं A, C और D correct है. So the correct option for this question is option number A.
The question is, the volume of air that leaves the lungs in the human is measured by spirometer. So the correct option is option number B. The question is, due to increasing airborne allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. So the correct option for this question is option number A. The question is, lungs are made up of air-filled sacs, alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of the residual volume. So the correct option for this question is option number D, residual volume. The question is, unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon, is commonly found in autonomous systems and the somatic neural system. So the correct option for this question is option number D. The question is, the Nissl granules it is present in the cell body and the dendrites. So the correct option for this question is option number C. The question is, identify A, B, C, D and E from the diagram. तो A जो है हमारा वो है corpus callosum, B cerebral aqueduct, C thalamus, D hypothalamus. तो यहाँ पे identify करना है हमें A, B, C और D को. So the correct option for this question is option number B. The question is, arrange in sequence the step of impulse of transmission. सबसे पहला तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल अराइव करेगा एक्सॉन टर्मिनल में, ये फर्स्ट स्टेप होगा. दूसरा स्टेप होगा कि जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर में पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में. सो दिस इज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग जो हमारा होगा वो होगा मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स मेम्ब्रेन. सो दिस इज द थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग जो हमारा होगा वो है मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे. सो दिस इज द फोर्थ थिंग. फिर एक्सॉन टर्मिनल जो है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल्स होंगे. सो दिस इज द फिफ्थ थिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी. The question is, consider the following statements. सबसे पहला statement, in a hydra, neural organization is composed of a network of neurons. So the statement जो है वो बिल्कुल correct है. दूसरा statement, in insects, brain is present along with the number of ganglion neurotissues. Correct. तो दोनों ही statements बिल्कुल correct हैं. So the correct option for this question is option number C. The question is, सबसे पहला statement, coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. Correct. दूसरा statement, during physical exercise, supply of oxygen is increased, which necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and decreased flow via blood vessels. तो ये जो statement है वो जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सप्लाई ऑक्सीजन की जो होती है फिजिकल एक्सरसाइज पे वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि रेस्पिरेशन जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट भी, पर ब्लड फ्लो जो है इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो द जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए. The question is, the partial pressure of oxygen in the alveoli is more than that in the blood. So the correct option for this question is option number B. The question is, partial pressure of oxygen and CO2 in the atmosphere air as compared to that of alveolar air is. तो जो O2 का जो partial pressure होता है एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा होता है, CO2 का लो होता है. So the correct option for this question is option number A.